Something else हाथ तो तेरा है मैं क्यों गा रहा हूँ ये बच्चों डर लगता मुझे करके बहाना तू मैं मुंह छंड जाना Okay, we are back. आज फिर हम काम करेंगे. I think 2-3 घंटा तो काम करेंगे. What we are doing is we are recreating this ताकि हमें अच्छा सा सेक्सी सा चीज मिले यार. Come on, we want to make it into 3D, right? Yeah. Let me open quickly Clip Studio as well. Oh yeah, I forgot. I set this shit up as well. एक मिनट दो. आता हूँ. आ गया. मैंने कर तू करने की. मैंने तोड़ी बढ़ने की. हाँ तो मैं आजाना हूँ तुम बताओ. मेरा नाम तुम समझ बताओ. चलो 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 हम आ चुके हैं. लाइक कर दीजिएगा स्ट्रीम. सब्सक्राइब कर लीजिएगा. 2 लाइक हो गए. किसने लाइक किया मेरा स्ट्रीम? मैंने तो नहीं किया. किसी ने तो किया होगा. करो. आओ तो चैट ही कर दो. भेज दो. वी रिप्लाई टू एवरीवन. वी टॉक विद एवरीवन. क्योंकि हम वेले बैठे हैं कि नहीं. चलो शुरू करेंगे तुरंत ही. So, so what I was saying is, चैनल कंटेंट नहीं. ये क्यों नहीं चालू हुआ? डिवाइस डिस्कनेक्टेड. अच्छा, मैंने अपना ग्राफिक टैब कलेक्ट नहीं किया और फिर मैं उसको स्टार्ट करने की शुरू कोशिश कर रहा हूँ. छूते ऐसा. आई टू स्टार्ट. पॉपअप्स आ जाएंगे. हम यस दबा देंगे. यस दबा देंगे. Perfect. I'm still watching Supernatural season 1 episode 15. ठीक है. चलो शुरू करते हैं आप. तो हमने कल ये हट को आधा कंस्ट्रक्ट कर लिया था, राइट? बट द थिंग इज द बैक साइड ऑफ इट इज मिसिंग. So we need something to clip it properly because with extension only, like अगर हम extend करेंगे it actually just projects the image. There is another thing that is repeat. I don't know what repeat even does. Oh, what repeat does, it try to copy it again. So what is it doing is there is a small transparent thing going on somewhere और वो उसको इधर डाल रहा है. ओके. सो अगर ये और ज़्यादा लंबा होता
For example, oh, my bad. Just to show you, okay, just to show you. Yo, what the fuck? Yeah, now we're gonna go project from view. Yeah, so repeat करने की कोशिश करता हूँ उसको, the whole texture is bigger than just this part, तो उसको repeat कर रहा है, ठीक है, whatever that might be, we don't care about that right now. हम इसको वापस ले आएंगे जैसा ये था वैसा करके, right? And कल we face this issue. So when we do this, we are seeing कि पहले तो ये fucked है because हम चूते हैं थोड़े से. What we'll do is we'll select these and size them down on x-axis, sorry, on y-axis. And we're using this thing called offset, जिसको O press करने से होता है proportional editing, and उसमें smooth editing. So it actually creates a smooth graph. Look at this line here. It's creating a smooth graph, और वो उस ग्राफ के हिसाब से अदर इंडेक्सेस को भी पकड़ के यूज करता है बेसिकली इन अ स्मॉल, अगर मैं ब्रीफली बताऊँ तो. एंड दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनल एडिटिंग इज. उसमें वी कैन एक्चुअली, आई एम गोना डू लिनियर आई गेस, क्योंकि हमारे शेप्स लीनियर है एट दिस पॉइंट. साइज ऑन वाई, big enough circle for them to actually pick all of those. Yeah, it has picked all of those. And I'll just connect it better. Right. Still what it was. There's barely much difference, but it just changed the shape, right? And with the this thing, the door, the issue is कि it means जिस तरफ ये डोर लीन कर रहा है उस साइड के वर्टिसेस ज्यादा दूर प्रोजेक्ट नहीं हुए, इसीलिए इट इज ट्राइंग टू वॉर्प इट्स प्रोपोर्शनैलिटी अराउंड दैट. सो व्हाट आई रियलाइज इज दैट इज, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूवी एडिटिंग में, बिकॉज हमारे प्रोपोर्शंस काफी सही थे, बट हमने इसमें जो मैपिंग किया है उसमें हमने हक दिया है, तो हम मैपिंग अभी चेंज कर देंगे. वी आर डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ, proportional editing. But you see, uh, if we see, there is a small gap here. This is also part of the wall. It is supposed to be part of the wall. And what we're going to do is we're just going to drag it slightly here. Okay? And you see, slightly, very mildly. Perfect. Now, to do it in real time, you can go to this side view and turn this into rendered mode as well. और फिर तुम इसको मूव करोगे तो वो भी फिक्स होते रहेगा, ठीक है. I almost fix it. The small problem lies here. A small issue here, however. Yeah. Also this, I guess. This is leaning thoda not towards that maybe. I don't know how to put it, but yeah, you get the point. You get the gist of it, right? That looks much better, right? What else? What else do you have to solve here? This? I don't know, इसमें क्या ही solve करना है? I think we need to move this part up because uh, those parts are not really getting the space they deserve. Also, can we just move it thoda? Can you just move all three of them slightly on here? Maybe, maybe. I'm just trying stuff out. It need not be perfect to be very honest. Should just look bearable to the eyes, I guess. The problem here that is happening is center place नहीं हो पा रहा है, हालांकि होगा भी नहीं because this whole thing is cursed. Trying to fix a cursed object, right?
पारा पा पा पा। क्या किया मैंने, क्यों किया ऐसा? Trying to see this is its solution. अब स्ट्रेच ऐसे हो रहा है कि वो डोर थोड़ा कम हो रहा है. लाइक इफ यू कैन सी द स्मॉल स्लाइड इंडेंटेशन हियर, यू विल नोटिस ये it is leaning towards this side. Why is that happening? Because you can see this length and this length are not same. There is a slight, like if this is straight, this is leaning towards the right side. That's why भाई मैं बना रहा हूँ कुछ चीज. मैं 2D को 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ. एंड या यूजिंग नथिंग बट कैमरा मैपिंग, क्योंकि ब्लेंडर में बहुत आसान है. व्हाट्स द विजन? द विजन इज दिस. सो दिस इज सपोज टू बी अ 2D व्यू. ठीक है, दिस सपोज टू बी अ 2D इमेज. हम क्या कर रहे हैं, 2D इमेज को ट्राई कर रहे हैं कि रेप्लिकेट करे 3D में, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द 3D फील ऑफ इट. लाइक अगर वो चीज़ें मूव हो, इधर उधर हो, तो ऐसा लगे कि वो एक्चुअली 3D है और ना कि 2D. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को 3D में ही कन्वर्ट कर रहे हैं. ये देख, ये चीज़ 3D में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि सिर्फ पहले एक इमेज थी. सो अगर मैं इस, नहीं ये नहीं, अगर मैं इसको हटाऊं और इस सिलेंडर को हटाऊं, ठीक है, तो ये घर है ही नहीं, राइट? तो घर पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है. ज्यादा कुछ नहीं बदला है, राइट? बट वो 3D है. दिस इज 2D, दिस इज 3D. और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि वो सेम रहे, क्योंकि हमें चाहिए वो. सो ये 3D है. द प्रॉब्लम विथ 3D इज कि उसकी विजिबिलिटी कम जाती है ना, कैमरा मूवमेंट. हाँ बट थिंग थिंग इज, अगर मेरे को इस सीन में ज्यादा कैमरा मूवमेंट करना होगा और मैं एक चीज को 2D में, मैंने ये पूरा इमेज 2D में बनाया था कल. आई विल जस्ट शो यू, एक सेकंड. विंडो कैप्चर में, हाँ बट thing is, you never know with such things how much camera movement you want. So just a second. किधर गए? क्रोम नहीं रहे. क्लिप स्टूडियो, you search rough paper, explorer photos. Okay. हाँ, ये दिख रहा है. So this is supposed to be how the image is gonna look. ठीक है, ये मैंने 2D में पेंट किया था. मैं चाहता हूँ कि ये जो 2D में पेंटेड है, इसको 3D में कन्वर्ट करूँ फॉर बेटर शॉट्स. क्योंकि तुम इससे कंसेप्ट आर्ट्स को भी 3D में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर एक 2D इमेज से 3D इमेज बना सकते हो, और वो भी बहुत सिंपली. एंड तुम्हें इसे सोचने की, विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2D इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तुम्हें चीजें थोड़ी और ज्यादा पेंट करनी पड़ेगी. बट अगर तुम अ, एक इमेज को बनाने में एक एफर्ट देते हो, तो तुम्हें उसको पूरा 3D कन्वर्ट करने में 2 एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें 2.5 एफर्ट देना पड़ेगा. ढाई नहीं, 1.5 एफर्ट देना पड़ेगा, 1.5 ओनली. सो तुम्हें 0.5 का जो एफर्ट है वही डालना है उसे रीपेंट करने में, क्योंकि आधा ही चीज पेंट करना है, आधी चीज ऑलरेडी पेंट हो चुकी है. सो या मैं दिखाता हूँ, समझा दूंगा पूरा. ये जो हट है मैंने ये 2D में बनाया था. ये जो हट है ऑलरेडी, अभी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 2D में. आई जस्ट कन्वर्टेड इनटू 3D यूजिंग नथिंग बट कैमरा मैपिंग. मुझे अभी पेंट करने की जरूरत क्या है, बस इतना पार्ट, ताकि इफ देयर इज अ कैमरा मूवमेंट देयर, आई कैन मैप दैट पार्ट आउट. एंड
प्रोपोर्शनलिटी इश्यूज होते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि क्योंकि दैट इज अ इशू दैट कम्स विथ, मैंने कल भी स्ट्रीम में बोला था कि पहले 2D था और हम 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3D में प्रोपोर्शनल्स एकदम एग्जैक्ट रहते हैं, लाइक पर्सपेक्टिव एकदम एग्जैक्ट रहता है। 2D पेंट में वो नहीं रहता। 2D पेंट में तुम थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, सो उधर फक हो जाता है। बट द थिंग इज, अगर तुम पहले 3D में उसका फोटो लो और उसके ऊपर 2D में पेंट करो और फिर उसे 3D में कन्वर्ट कर दो, इट विल बी लॉसलेस, इट विल बी परफेक्ट। उसका भी एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं तेरे को, बहुत ही तुरंत से। फाइल ओपन रिसेंट, आई गेस ये था, ये था। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, अच्छा बेटा, मैंने ये बंद करना ही भूल गया, वाह। हाँ, तो कल मैंने ये बनाया था। अब मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही जुगाब चीज़ ले लिया, बट अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर मैंने कल इसको सिर्फ इससे पेंट किया था, ठीक है। इफ यू कैन सी, मैंने पहले ये 3D ऑब्जेक्ट को बनाया। कहाँ गया? तो मैंने कल पहले ये 3D ऑब्जेक्ट का रेंडर लिया, ठीक है, बिना कोई टेक्सचर के। सो इट लुक बेसिकली लाइक दिस। उसके ऊपर पेंट किया ऑब्जेक्ट्स, सो यू कैन रेंडर अ व्यू पोर्ट प्रीव्यू। एक व्यू पोर्ट प्रीव्यू रेंडर होता है जो कि कुछ नहीं रहता, व्यू पोर्ट में जो दिख रहा है, ये कैमरा के अंदर जो दिख रहा है उसका एक फोटो आ जाएगा। उस फोटो को क्लिप स्टूडियो में लिया, क्लिप स्टूडियो पे उस पर पेंट किया, विच आई विल शो यू अगेन। इंक्रीमेंटल ट्रायल था, बॉल्स बॉल्स में था। बॉल्स, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। तो आई विल ओपन, ये दिख रहा है। आई पेंटेड दिस 2D में, इस सॉफ्टवेयर में। मैंने कल इसको इसी सॉफ्टवेयर में पेंट किया। इट लुक्ड मोर और लेस लाइक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती हो गई, कर दिया मैंने। एक सेकंड, फोटो खुल गया। इट लुक्ड मोर और लेस लाइक दिस, ठीक है। आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, तो इट लुक लाइक दिस पहले, एंड मैंने उस पर पेंट किया, 2D पेंट किया, एंड आई मेड इट इनटू दिस। ये बनाने के बाद आई मैप्ड इट ऑन टू ब्लेंडर, जो कि पहले ऐसा ही था। एंड उस पर मैप करने के बाद इट लुक्स लाइक दिस। क्यों? क्योंकि विदाउट दिस लाइट इट स्टिल हैज इफेक्ट, बिकॉज फिर मैंने उसको वापस पेंट किया, विच इज, ओपन करेंगे इसको वापस।
क्योंकि हमने ये पेंट किया, ठीक है। तो हम 2D पेंट कर रहे हैं और वो 3D में हो जा रहा है, क्योंकि इट्स फॉलोइंग द सेम स्टफ। अब मेरे को बस ये सेम चीज और एक बार इधर करनी है और एक बार इधर करनी है, क्योंकि ये जो ग्लिचेस है वो गायब हो जाएंगे उससे, राइट। क्योंकि ये डुप्लीकेट कर रहा है उस चीज को। तो ये करता क्या है, ये जो पूरा शेप है, ये शेप्स के जो वर्टिसेस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यूवी एडिट में उस सबको ऐसे प्लेस करता है कि वो उस इमेज के साथ ही प्लेस हो जाए। जब वो इमेज के साथ प्लेस होते हैं, तो फिर वो इमेज में जो भी वैल्यू है, डेटा है, जो भी है, वो उसी पे अप्लाई हो जाता है। एंड बिकॉज वो शेप सेम है, तो वो अच्छे से अप्लाई होता है, मस्त एकदम। अब अगर हम इसको प्रोजेक्ट 2 को चेंज करके वो फोटो लगाएं जो हमने पहले बनाया था, प्रोजेक्ट 1, दिस इज प्रोजेक्ट 1 राइट, जो मैंने तुम्हें दिखाया। तो अभी हम इस पे इंस्टेड ऑफ ये एमिट कर रहा है लाइट, तो इस पे शेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है। हालांकि अगर हम इस पे चाहें तो भी हो सकता है कि नहीं। रफनेस को हाई कर देंगे और ट्रांसमिशन को फुल कर देंगे आई गेस। एमिट करना ही पड़ेगा, मेटालिक लाइट कम है ना, ठीक है। एक से दुनिया में ही लाइट कम है, रोशनी नहीं। सो या सो अगर ये एमिट लाइट को एमिट नहीं करेगा और ये एक्चुअली एक कप किसी नॉर्मल मटेरियल का बना होगा तो ऐसा दिखेगा। हालांकि हम उसका शाइन बढ़ा सकते हैं यूजिंग दिस, और स्पेक्युलेटिव नहीं, कोट, आई गेस कोट, कोट कर सकते हैं उसको यूजिंग अ शाइनी मटेरियल which will make it look like this। कोट का रफनेस भी बढ़ा सकते हैं हम चाहे तो। स्पेक्युलरिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, स्पेक्युलर को नहीं, स्पेक्युलर से बकचोदी नहीं करेंगे। डिफ्यूज, डिफ्यूज भी रहने दो। रफनेस आईओआर, ट्रांसमिशन, सब सरफेस का नहीं यार, ये सब तो नॉर्मल ही है। टिंट के साथ अगर हम इसे जोड़ें तो क्या होगा, क्या ये बेटर दिखेगा? ऑल्सो मेटालिक, मेटालिक करना चाहिए, आई थिंक हाँ, कर सकते हैं। बट या तुम उसके साथ कुछ भी करो, उसके बाद वो तुम पे है। तुम उसे मारो पीटो, कुछ भी करो। मैं अभी तो कोट ऑफ कर दूंगा क्योंकि कोट चाहिए नहीं हमें। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक विदाउट एनीथिंग एट ऑल। इसका रफनेस कम कर सकते हैं और चाहे तो, और इसको शेड स्मूथ भी कर सकते हैं ताकि ये स्मूदर दिखे, हावेवर इतना भी नहीं, ऑटो स्मूथ रखेंगे। सो ऐसा दिखता है। मेटालिक भी कम हो रहा है, मेटालिक भी नीचे। बट हमारे पास अभी दूसरे मैप्स नहीं है, लाइक बिकॉज ये सारे चीजें, ये जो है ये सब स्क्रैचेस हैं, तो हमें स्क्रैचेस के लिए एक मैप चाहिए, राइट। तो हम इसको तुरंत अभी मैप भी बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में कुछ भी ऑप्शन ओपन कर रहा होगा वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है guess। अरे बहन चुद गई सालों, मैं ब्लेंडर पे काम कर रहा हूँ। चुद गए रे, चुद गए। वापस दिखाता कोई नहीं। सो एक सेकंड। सो अपेरेंटली इट इज सपोज टू लुक लाइक दिस, क्योंकि मैंने जो पेंट किया था, इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक दिस। मैंने ये पेंट किया था और अभी हमारे पास ये है, राइट। वहां चुक जाती है, अरे मेरे को आता नहीं है सब। मेरे को लगता है मिनिमाइज, मेरे को डिस्प्ले कंट्रोल सीखना है, बट डिस्प्ले कंट्रोल में ना चीजें लीक होने का डर रहता है हमेशा। मेरी तो बहुत फटती है भाई। उस दिन संतुल के स्ट्रीम पे उसी का नंबर लीक हो गया था, आई वाज लाइक नहीं चाहिए मेरे को ऐसा सब। हाँ, तो वापस हमने ये पेंट किया था कल, और अभी यही दिख रहा है हमको, राइट। एकदम इन अ स्फीयर फॉर उसमें है बहुत सारे डिफेक्ट्स, क्योंकि ये सारे शेप्स मैच नहीं हो रहे, बट हु केयर्स अबाउट दैट। हमें एक दो शॉट चाहिए, उसके लिए हम इधर और थोड़ा फिक्स कर देंगे, इधर और थोड़ा फिक्स कर देंगे, हो गया। फिर हम उसको रोटेट करें, किसी को थोड़ी पता चल रहा है कि ये मैप हो चुका है या नहीं हुआ है, नहीं पता चलेगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स वगैरह में हम यूज कर सकते हैं इसको, राइट। वेल,
सिंपल चीज ये है कि हमने इसको एमिशन पे डाला है। एमिशन पे क्या होता है, ये लाइट एमिट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, और इस कलर के मुताबिक लाइट एमिट कर रहा है। तो फिर ये शैडोज खुद से फॉर्म नहीं कर सकता अपने अराउंड, लाइक अ कप कैन, इट इज बेसिकली लाइट बल्ब एट अ वेरी लो स्ट्रेंथ। ठीक है, ये एमुलेट कर रहा है। हालांकि अगर ये कोई कप है, ये कोई प्लास्टिक है, तो हाउ विल इट एमिट ऑब्जेक्ट, ऐसा दिखेगा वो। क्यों? क्योंकि ये रफ है, सॉरी रफ नहीं है ज्यादा। एंड जब रफ नहीं है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, और इसके कलर्स अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ और बकचोदी करेंगे। जैसे कि क्लियर कोट नहीं, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को ऑफ करो पहले। ट्रांसमिशन मतलब होता है ग्लास। सो अगर पहले तो प्रिंसिपल बीएसटीएफ का तुमको थोड़ा बताते हैं। सो इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंस इज, जब रफनेस कम होता है तो दिस इज सपोज टू बी, थोड़ा डार्कर कलर लेंगे आप, ठीक है। ये ग्रे कलर का सॉलिड है, ठीक है। ये ग्रे कलर का सॉलिड है। ये एक लाइट सोर्स है जो कि एक प्लेन है, एक स्क्वायर के शेप में है। तो तुमको ये स्क्वायर का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा इधर, दिस इज अ स्क्वायर का रिफ्लेक्शन इधर, राइट। हम इसे मूव करेंगे तो ये जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। पूरे जंगल का जो चारों तरफ है उसका भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है, राइट। अब रिफ्लेक्शन क्यों दिख रहा है? क्योंकि रफनेस कम है। रफनेस अगर ज्यादा होगी तो कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैट ऑब्जेक्ट के साथ ये होता है और ग्लॉसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है, राइट। हम रफनेस को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से। दूसरा वैल्यू इज मेटालिक। मेटालिक कुछ दूसरा ही करता है इसके साथ। मेटालिक इसको मेटालिक बनाता है। हालांकि मैट मेटालिक इज नॉट व्हाट वी हैव ग्लॉसी मेटालिक। ग्लॉसी मेटालिक becomes something like a glass. We can actually push it something else and it will become actual, like look like a metal ball, right? हालांकि मेटालिक हमको चाहिए नहीं अभी। व्हाट वी ट्राइंग टू शो इज, ट्रांसमिशन क्या करता है ट्रांसमिशन के साथ, या ट्रांसमिशन के साथ ऐसा होता है कि विल जस्ट स्विच इट टू साइकिल्स। साइकिल्स में ट्रांसमिशन अच्छे से होता है। ट्रांसमिशन इज ग्लास, कि वो चीजें अपने आर पार जाने देता है। एंड इसमें रफनेस ज्यादा होगी तो कुछ आर पार जाने नहीं देगा, सब अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है वो। बट रफनेस कम होगी तो ये बन जाएगा कांच का टुकड़ा। तो जो भी आर पार है वो दिखेगा। तो अगर एक कांच का बॉल होता तो वो ऐसा दिखता, ऐसे बिहेव करता। हालांकि तुम्हें और अच्छे से देखना है तो आई कैन एक्चुअली डिफॉर्म, नहीं जनरेट और सॉलिडिफाई, ताकि वो एकदम हॉलो कांच जैसे बिहेव करे। एक्चुअली इनलार्ज इट आउटसाइड में भी और इनसाइड। इनसाइड बट बहुत कम। ऑफसेट बढ़ा देता हूँ मैं, दैट विल डू द सेम थिंग बट उल्टा। हालांकि ये चाहिए नहीं हमको अभी ये सब बकचोदी, वट एवर। पॉइंट ये था कि ये कांच जैसे बिहेव करेगा, और कांच अभी अब बहुत डार्क लग रहा है, हम इसको और लाइट कर सकते हैं तो ये प्रॉपर कांच जैसे बिहेव करेगा। इसके आर पार एकदम सनलाइट दिखेगी, जो करना है कर सकते हो, राइट। तो मुझे बनाना था ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली एक ग्लास का बीड है, बट बहुत डार्क ग्लास का बीड है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा रियलिस्टिकली। हालांकि इसमें जो हमने डाला है स्क्रैचेस एंड एवरीथिंग, जो कि ये सब है, ये सारे स्क्रैचेस रफ होते हैं। ओके, सो अगर स्क्रैचेस रफ होते हैं तो इसमें नहीं दिखने चाहिए एज दिस स्मूथ। तो हम अभी क्या करेंगे, टू गो अराउंड दैट, और हम और पेंट ना करना पड़े, हम इसी में टेक्सचर्स को मॉडिफाई करेंगे। कैसे? हमारे पास, हम पहले लेंगे कलर कलर रैम, जो कि इसके फैक्टर को लेके उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करता है, और हमें इट इज समथिंग सिमिलर टू लेवल्स इन फोटोशॉप। तो डार्क को बढ़ाएंगे डार्क होगा, लाइट को बढ़ाएंगे लाइट होगा। तो हम इसको बढ़ा के वी वांट समथिंग जो कि बहुत वाइट हो और बहुत ब्लैक हो, समथिंग लाइक दिस। तो हमारे चीजें मैप हो चुकी है। दीज वाइट पार्ट्स आर द स्क्रैचेस, ब्लैक पार्ट्स आर द नॉन स्क्रैच एरिया। अभी हमारे पास, वी कैन कॉल दिस अ रफनेस मैप टू 1 डिग्री, अ सर्टेन एक्सटेंट। तो अगर हम इसको रफनेस में प्लग करें और अभी देखें, तो आप देखोगे कि जो फेसेस हैं जहाँ पे स्क्रैचेस हैं वो रफ हो चुकी है, उसके थ्रू लाइट पास नहीं कर रही, राइट। बट व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज व्हाइट और ब्लैक दो अलग बहुत डिस्टिंक्ट लेवल्स हैं, और ग्लास में ऐसा नहीं होता है, नेचुरल ग्लास में। सो हम व्हाइट को कम कर देंगे। नहीं, व्हाइट को एक्चुअली व्हाइट ही रहने देंगे, हालांकि थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वी कैन फक अराउंड विद लॉट एक्चुअली, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वैल्यू। ब्लैक को हम लोग थोड़ा ऊपर कर देंगे। And हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं actually।
हम इसको वापस फ्लैट करेंगे जस्ट टू सी हाउ इट लुक्स। क्या लग रहा है ना कि इस पे स्क्रैचेस आए हैं, हालांकि बिकॉज दिस मटेरियल इज वेरी क्रूडली मेड तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, बट we just cut this off and turn this into like the gray, then you can maybe see what I mean कि जहाँ पे scratches है उसके थ्रू लाइट नहीं जा रहा है, right? These are the scratches, they look like scratches, उसके पीछे ग्लास है, okay? And इस वैल्यू से हम ये कर सकते हैं कि है मेरा कंधा चुभ चुका है आज बैठ बैठ के, this would look like this, हालांकि because of the background it's actually not accepting much but letting a lot out। इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या हम इसको यूज करके क्या हम एक लाइट प्लेस कर सकते हैं इसके बीच में, क्योंकि ओरिजिनल आइडिया वही था। सिलेक्टेड अ लाइट, अ पॉइंट लाइट, बट हमें पॉइंट लाइट भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही चाहिए, उसका रेडियस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इज देयर अ ब्लेंड, सॉफ्ट फॉल ऑफ ब्लेंड है, पावर एक्सपोजर नहीं, ओके तो फिर हम रेडियस को कम ही रखेंगे, पावर को बढ़ा देंगे आई गेस, नहीं रेडियस थोड़ा तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसके बीच में अभी एक लाइट प्लेस किया है और बाहर का लाइट अफेक्ट ही नहीं करने देंगे, ठीक है। हम वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में से इसको काट देंगे ताकि लगे कि ये एक डार्क दुनिया में है। बैक टू ऑब्जेक्ट, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऐसा एक्ट करता है ग्लास के थ्रू, चीज़ें पास नहीं होने देते और चीज़ों को, लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हालांकि दिस इज टू परफेक्ट राइट नाउ, तो इसको अगर हम ब्लैक करेंगे तो एकदम ही कांच वाला दिखेगा, नहीं तो यू कैन एक्चुअली increase this if you want, decrease it if you want, do whatever you want। इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग, लाइट का, रेडियस बदल सकते हैं अगर चाहे तो, यू वांट इट टू ग्लो स्लाइटली, हालांकि आई रियली वांट इफ लाइट इतना, ओके हो सकता है सॉफ्ट फॉल ऑफ, उफ ये सब नहीं चाहिए हमको, शैडो कॉस्टिक्स नहीं, सॉफ्ट फॉल ऑफ से क्या होता है, इतना कुछ नहीं होता है, बट ओके व्हाटएवर, इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस राइट नाउ। जो कि बहुत ही चूतिया लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम इसे सन बनाए तो क्या हो, सन डजंट डू दैट। स्पॉट, स्पॉट दादा क्या कर रहे हैं, स्पॉट दादा नीचे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे चाहिए कि ये ब्लेंड हो बट आधा आधा, तो फिर हमें लाइट की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज वी कैन क्लियरली मैनिपुलेट बोथ ऑफ दीज इनटू अ मिक्स्ड वन, इसका फैक्टर एडजस्ट कर सकते हैं, बट द फैक्टर शुड बी एडजस्ट ऑन समथिंग ऑन दिस बेसिस, तो हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और इस पे आई थिंक ब्लैक करेंगे इसको, बट भैंसचोद ये तो ड्रैगन बॉल लग रहा, ये थोड़ी चाहिए। Yeah, that, this is more like it. I would still like it to reflect. Yeah, this is what I wanted, कि वो पीछे की चीजें भी थ्रो करे and this would look stylized and not something that's perfect। रियलिज्म थोड़ी चाहिए हमको, हमको रियलिज्म चाहिए नहीं, फक रियलिज्म।
एरिया लाइट, हमारे पास एक एरिया लाइट था टू मिमिक व्हाट इट एक्चुअली इज। इस पे रफनेस जुदा था ना, रफनेस कहाँ गया? हम इसको रफनेस को वापस ब्लैक कर सकते हैं क्योंकि वी वांट दो शार्प एजेस। हाउएवर दिस लाइट इज अ बैड लाइट फॉर दैट, क्योंकि ये एरिया लाइट है। तो ये सिर्फ कर दूं मैं आता हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, आराम से स्पॉट लाइट कर सकते हैं। और शुड गो बैक टू सन। अगर हम सन लें तो हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, 5 ही रखना पड़ेगा। we'll have to rotate this, rotate it on z axis until we want some good sharp edges, ताकि एंगल बहुत isn't forming anything. I don't know, it is forming something. It's working only on that. Oh, I see. Okay, so what we can do for that is actually change the white as well to something that's more grayish, maybe. शायद उससे कुछ हो, right? Point. However, it should affect that. It's not affecting that. एरिया को जाके वापस एरिया को ही कन्वर्ट कर देते हैं। अभी के लिए एरिया ही रहने देते हैं बिकॉज जस्ट स्टिल वर्किंग अराउंड विद दैट। बैक टू वाइट और जस्ट कीप इट वाइट हियर। बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट नाउ, राइट नाउ इज कि इसके साथ जब हम बकचोदी करें, जब हम इस लाइट के साथ बकचोदी करें तो वो चेंज हो जैसे हो रहा है। बट द थिंग इज विद अ बेटर शेप्ड लाइट इट शुड बी लाइट रिएक्टिव। Maybe I know what is happening. Maybe it is not casting shadows और स्पॉट के साथ होता है क्या? तो इसमें एक फेंट ग्लो दिख रहा है बट हमें चाहिए कि ये एक्सट्रीमली शेप रिएक्टिव हो। ओके, शेप से लाइट रिएक्ट करे ताकि हम जब ग्लासी ग्लॉसी चीजें बनाए उसके साथ भी खिलवाड़ करे। फोन शो मत करो, हमको चाहिए कि रेडियस और थोड़ा बड़ा हो, मे बी। एंड डेफिनेटली ये तो बड़ा होना ही चाहिए। शार्प इमेजेस चाहिए ना हमको। Look for sharp edges at light. If you are at the edges, right? तो रोटेट ही नहीं कर रहा मुझे, करना घूम जा। Can you put some light over there, sir?
thing is, it's not reacting beyond that. Trying to rotate it at a certain angle जहाँ पे हमको उसके reflection दिखे. हालांकि I'd also like to go back to EV. I think cycles में issue हो सकती है, EV में नहीं होगी. That's my belief right there. And I can actually work with something better than this, because with just the emission, it's not actually, this is the emission issue. This is not something else. So clear emission issue, जो कि actually solve हो जानी चाहिए. हालांकि I'll go back to, क्या हम साइकिल्स को वापस जाएंगे? हाँ, चलेगा हम साइकिल्स को वापस. या दिस इज अ इशू जो कि हमें एमिशन के साथ अगर हम ग्लॉसी आउटपुट लगाए या फिर ग्लास, सो ग्लास बीएसडीएफ में इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो नॉट ग्लास, ग्लॉसी. ग्लॉस में इट विल लुक लाइक दिस. दिस इज व्हाट द एज वी वांट, राइट? इट्स द एज वी वांट. सो हम अगर एमिशन के साथ इसको मर्ज करें, व्हाट डज इट लुक लाइक? दिस इज व्हाट वी वांट. सो with this, can we increase the decrease? अच्छा, एकदम रफनेस खाली रहता तो फिर it doesn't react at all. Fair, I guess, but हमें चाहिए. Okay, रफनेस कम हो तो भी हमें चाहिए. So I guess Blender does not react with light like that. So हम क्या करें? एक काम जो हम कर सकते हैं, yeah. So I guess we'll need an actual emission node that actually what manages that. I guess no. Okay, so maybe we need a light map or something. Diffuse, diffuse BSDF. Diffuse do the same thing. नहीं, we want a map जो कि लाइट और शैडो को जज करे. लाइट पाथ में भी just trying stuff out right now. So there's nothing here. Raycast, particle info, object info. Must be an inputs, right? Camera data, attribute, Google, info, final, geometry, layer weight. What can be called? Raycast. Raycast? Light value? Are definitely not.
So light is actually reacting to that. Okay, I think we need to be maybe that maybe just diffuse. No, not emission. Diffuse BSDF along with color. Does it work on this? Shader to RGB. This is what I needed. So this you can actually duplicate a color ramp here. You're not there, exactly not there, fucker. Yeah. So it might connect with this. Just seeing this right now. Is it changing? Is it not changing? What's happening? This is black, it's not visible at all. Roughness and okay. Okay, now it's changing. However, it's still not light reactive, right? If we change this to glossy, it's compiling. That's why. EV is kind of slow with this shit. Yes, it's nothing visible as expected. But this is what we needed. Okay. Reactive lighting. So reacting to when we are moving around it. Decrease the roughness to. Does this work on cycles? Color, the RGB doesn't work at all, right? This layer itself doesn't work with cycles. Fine, actually, we don't need cycles for this, to be very honest. Roughness should be 5, but what we'll do is we'll bring these values close together. We're going to ramp this up for sharper edges. Now this looks more like a stylized glass object. We can have it merged with this just for this part. Okay. Everywhere else it's directly connected except for our little boy here. Let's see what it looks like. So do we even need that though? Can we just plug it there? What's wrong? This mix is working just fine, right? It's not. It's not fine. Let's come back. Yo, yeah, this is something which we wanted technically, right? Glossy, but the glossy looks actually pretty ugly to be honest. Why? Why is that? Because the emission is just white. The reflection is purely white. So that should go away with this, I guess. I don't know. Let's see. Let's see, right? क्या ही है?
Compiling, buddy? What's wrong? Go back to this, maybe. Oh my god, is my laptop slow by just this? There should not be the issue here. Shall it be? No. This is what it looks like right now. What we want is slightly darker because this looks like this. This looks ugly as fuck. What this is doing is how this is helping is it's just good for a transmission thing. Well, the emission, mix shader, done pretty good job. However, cycles look a lot better with that. The back blurring with the back key thing, whatever it is, I don't know. Right now, I'll just put this go to cycles and I will check it once again. Why does it look so good with cycles? Yeah, because it's also rendering what's behind it, right? That happens why? Yeah, so this is what looks good with that. But the problem with that is this is too sharp, I guess. This looks too much like a glass right now, reflecting everything that's behind it. For that, I'll just change this black to something that's not black. It can. Man, Sam Winchester is my goat. So this right now looks pretty glassy, right? How do glasses like do glasses actually show stuff like this? No, right? You can actually this. You can see a small dot here that's moving. That's what is glass right now. Essentially, this glasses don't reflect like this. Glasses are not exactly smooth, right? I'll just go over to Pinterest for references. I think I haven't touched glass in a while, so I don't even have an idea how it should look. Yeah, open.
Definitely not ekdam sharp, definitely slight edge, so we can't keep it all black. And this is supposed to be obsidian, so we can go for like zero point 0.1 something, I guess. This seems fine. However, the sun here, is it even a sun? It is a sun. And we had a angle to a sun, right? Yeah. This is how big the sun is supposed to be right now. Okay, yeah. This is a reactive, small reactive light. This is very juicy though, right? The emission is now affecting the color as well as that, but yeah. So what we'll do is go back to this. So now it's giving two lights. Ooh, juicy. I'm just gonna want to like it was. Yeah, sorry, I just started watching it. Yeah, indulged in our supernatural drama. Sharper, even sharper. I got it even sharper. Just realized I could have done that, but I want a more colorable and stylized stuff and not that. So yeah, on top of that, I'll just keep it to point 0.2 again. What we want to do right now is complete this completely white. Why is that not working? Ooh, because I know this emission itself. Okay, the emission is nice. The emission is not actually anointing itself to it. So what we can do is it's affecting the factors. That's affecting the factors. So I can actually click this with this. That might work. Come on, compile it, bro. How long you gonna take, bitch? Come on, cycles, right? Come on, do it. So fucking slow. You can do it. You can do it. Yeah. This. However, it's too dark right now, I guess.
create another value here because when it's completely black and this is the factor, let me see how the factor looks. The factor should not be set to anything else, but yes, I guess it's getting too complicated. I guess I don't know. Ooh, it's not going into it only. This is a mixed color, right? I want to look how this looks first. This looks like that. Now that might be better slightly. God, my shoulder is fucked due to bad position while sleeping. I don't know how to fix it. Been like this for hours now, and it hurts. But whatever. Yeah, this is much better, right? I'm gonna crank up the white a bit because we want it. This looks perfect. Very reactive, very stylized thing there. Slightly, slightly darker, I guess. Okay, can't be slightly lighter either. Yeah, this works perfect fine. बहुत अच्छा. However, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा इतना डार्क क्यों है. So because of that, I might use that as a थोड़े tweaks करने पड़ेंगे but yeah. Right now I'm checking जो mask हम कर रहे हैं दो materials को. There are essentially two materials here. This is one of the realistic material and one that I'm trying to stylize it with emission. ताकि एकदम realistic ना लगे और एकदम emission ना लगे, right? So this is how it looks here. However, it looks very uh, oof, अजीब सा because it's not completely that side. So what I'll do is I'll simply change this into white. See this right? And that looks much better. Yes, white looks really less white. Can I change it? Maybe the emission. Yeah, this looks as white as it can get, I guess. Let's combine it. Come on, come on, come on. कर लेना compile. बड़वे. Does the shine look natural to you though? No, right? Looks very messy, right? You want something that will control that as well. And full of it is not reflected away. To decrease this is what we want, right?
but still looking very realistic because of that small fucking dot of the sun. 0. I'm just looking at references as well. So yeah, this definitely is unnatural because well, it's I don't know, it just looks fucked up to me. Now let's go check it out and yeah, we can't check it out in cycles because it's fucking fucked. But without that, what I'm slightly gonna do then is for because we definitely need that. However, what if we don't go out of um, cycles, so EV as well? What the heck is going on? Yeah, let me just switch back to EV. Gonna make a lot of stuff simpler. Fucking shoulder or the volume thickness.
What? Oh, oh, good. Oh, Meg is that bitch. What? Meg Masters, right? Yeah. There's no volume working here. Why is that? I think you haven't turned that shit on only. Render, EV, custom range, max depth, close, simple bar, and depth of field. Oh, get it? It's not working. Backface culling? Camera? No. Shadow? Light probe only. Displacement? Not this. Maybe this. Blended method. Die third might not do it. Let's see. Not sure how to get that. I just want to see if the volume's working or not. That's why I'm just switching it back to principal DF, VSDK, whatever, VRDS, call it whatever you want. Okay, Sam, okay. Need to be peeping. Oh, God. This is the ugliness here right now.
thing I don't understand it. Why is it not? Because there's no volume here, maybe. Um, it's not here. Intersection is accurate. So it's kind of working, but so that's behind it. However, this is too black, I guess. Wall's not bright enough. Oh, what happened? Plug this back for that. Not really appreciate just this. Just a good transparent thing that I can work around with. What's wrong with this? Yeah. Should this is should this be how it should look like? I don't know. Transmission affecting it? And it is, but is it? Yes, I'll just go after 10 minutes because it's gonna be, I guess, 1.5 hour of stream, I guess. Yeah, yeah, it'll be 1.5 hour. And I'll leave. Anyways, the thing I don't get is it's not accurate, right? Can't be accurate. Is blended better this way? Um, um, let's just pull it back, maybe. Yo, what's wrong? What's this? What's happening? Oh, the world. So it is actually doing that, but not great because how dark it is actually. The base is dark, right? Yeah, that's the issue here. Turn this off, maybe. Let's see.
So this is the error. Oh, sorry, my bad. My bad, my bad. All right, 5 more minutes. Let's see. क्या होता है? आई थिंक 10-15 तक जाऊंगा यार. चला लूंगा 5-10 मिनट के लिए. So this is the map, right? I think we have to duplicate this map. The inputs are, this is the input, right? Just, ramp it up to now the black part so that that's how much I wanted to affect value on that much. Why? Why is it looking like this?
Man, for some reason, cycles the best. Love cycles. Look how smooth it will be. I just go back all the way till I didn't even duplicate that shit. That was so perfect. That was everything I wanted. Okay, everything I wanted. What am I sending, bro? I'll save this here right now. Go back to circles to look. That shit is working. Oh, that won't work right now, but this looks stylized enough to be honest. I'm just gonna go crank this shit up a bit with this. Alright, I don't have that patience. Sorry, Evie. But strength is fine. So the angle changes here. It becomes like a bigger circle. 40. Can I normalize this? No, we shouldn't. Multiple components, distance, accumulate. And bias this. Light paths. Transmission is just one. Yeah, you see what happens with this.
Bang. This is what we have reached right now. Trying to stylize a fucking glass piece of shit, whatever it is. But I don't mind it. I just want to get rid of this. Simple fix is if I turn the transmission down to 0, so I can get everything else, but not that. However, that's a structural. I'm pausing the function to stop it, not the other way around. I want this to be more. Also do this. However, everything else would be fogged as well. I don't want that either. This looks good. Yeah. Anyways, मिलते हैं रात को. I don't know if I'll play something or not, but maybe. चलो बाय बाय गुड नाइट. गुड नाइट नहीं भाई, अभी तो 8 ही बजे हैं. मिलते हैं जल्दी वापस. शायद हम काम करेंगे, शायद हम कुछ और करेंगे. ये देखो बैक टू. आई एम नॉट दैट. मतलब ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो ऐसे बना टू हैव समथिंग हियर एंड देयर. क्या है और कुछ है? नहीं. चलो मिलते हैं फिर.